Good morning class. Today we will read lesson 2, working with computer parts in computer. Now let us take the example of a car. It is made up of many parts like its engine, wheels, gears, etc. All these parts of the car work together for the car to move. Similarly, a computer is also made up of many parts, and all these parts work together for the computer to perform various tasks. Now, different parts of computer are: first is monitor, second is CPU. CPU here stands for Central Processing Unit. Third is keyboard, fourth is mouse, and fifth is speakers. These are the main parts of every computer. Other parts are also there, but these are the main parts of the computer. Every computer is having these parts. Now first is monitor. Monitor is an output device that displays the work that you do on a computer. जो भी वर्क आप करते हैं मॉनिटर पे, जो भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, वो सब आउटपुट जो है, रिजल्ट जो है, वो डिस्प्ले कहाँ होता है? मॉनिटर पे होता है. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. LED monitors are using nowadays. Now what is the importance of LED monitors? LED monitors are light in weight. They consume less power, means less electricity. They provide sharp picture display, means good quality picture. And the full form of LED is light emitting diode. CPU. CPU stands for Central Processing Unit. CPU is known as brain of the computer also, because CPU solves problems and it also controls the working of other parts of computer. That's why it is called the brain of the computer. It is also called the microprocessor. CPU is inside the CPU cabinet. Now third is keyboard. A keyboard is an input device. It is used for typing and giving instructions to the computer. कीबोर्ड क्या है? वो एक इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड की हेल्प से हम टाइप करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. कीबोर्ड हैज कीज फॉर टाइपिंग अल्फाबेट्स. जो कीबोर्ड होती है उस पर कीज बनी होती है, और उन कीज पर, छोटी छोटी कीज पर बटन्स हैं, वो कीज उन पर अल्फाबेट्स टाइप होते हैं, नंबर्स टाइप होते हैं एंड कुछ साइन भी होते हैं. जो हमें इंस्ट्रक्शन जैसे देना होता है, टाइप करना होता है, तो विद अल्फाबेट्स वी आर टाइपिंग. इफ यू हैव टू यूज द नंबर्स, तो वी हैव टू टाइप द नंबर्स देयर. एंड इफ वी हैव टू यूज द साइंस, देयर आर द साइंस ऑल्सो ऑन द कीबोर्ड. वी हैव टू यूज द साइंस विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड. Now fourth is the mouse. Mouse is a pointing device and is used for pointing and clicking. माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंट करता है. फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग के लिए यूज होता है. इट्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज. नाउ माउस हैज टू बटन्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. माउस हैज टू बटन्स एंड अ स्क्रॉलिंग व्हील बिटवीन द two buttons. There are two buttons, left and right button, and in the middle there is a scrolling wheel. Mouse has pointer arrow like it moves on the screen in the direction of the mouse moves. By clicking the buttons in the mouse, we give command to the computer. Now fifth is the speakers. There are two speakers. Speakers help us to listen to music or other audio from the computer. Now about the UPS. UPS is also attached to the computer. What is the importance or advantage of the UPS? UPS stands for uninterrupted power supply. We attach a UPS to our computer so that the computer does not switch off suddenly when there is power failure. Means ये इससे कंप्यूटर्स में अटैच किया जाता है, लगाया जाता है, यूज किया जाता है कि एकदम से इफ यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एंड सडनली लाइट चली जाती है तो आपका जो वर्क किया हुआ है वो सेव हो जाए. और यूपीएस वर्क्स ऑन बैटरीज, so it gives you some time to save your work.
So we are using UPS to give the power supply in the absence of the electricity or when there is power failure. Now below again I have written the words monitor, keyboard, mouse, speakers, central processing unit. You have to learn the spelling of these.